Okay, so we will do the second reaction of elimination. We were doing reactions of alkenes, sorry, MOPs of alkenes. Okay, so we started with the elimination reaction in the last video, and we have already done the first one, that is from alkyl halide. Now this one is also similar to that, only the starting material changes. There you had alkyl halides, here you have alcohols. तो वहां पे alkyl halide था, तो elimination करने के लिए हमने halogen और hydrogen को निकाला था. That was dehydrohalogenation. क्योंकि यहाँ पे alcohol है, तो we are going to remove H and OH, so this is dehydration. डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ H2O. यहाँ पे मैंने एक जनरल रिएक्शन लिख दिया है, तो इट इज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट वन. तो मैंने दोनों हाइड्रोजन, पहले कार्बन पे मैंने दोनों हाइड्रोजन शो किया, एक ऊपर और एक नीचे, और दूसरे कार्बन पे मैंने OH शो किया. जो जो कार्बन पे OH है, दैट मींस इट इज द अल्फा कार्बन, एंड उसके बाजू वाला कार्बन इज अ बीटा कार्बन. अल्फा कार्बन से OH लूज होगा, बीटा कार्बन से H लूज होगा, बट हम ऑपोजिट साइड से लूज होगा. बराबर. डिहाइड्रो एलिमिनेशन में ऑपोजिट साइड से चीजें जाती हैं. यहाँ पे वाटर निकालने के लिए हमें एक रिएजेंट चाहिए, एंड दैट रिएजेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. H2SO4 इज एक्टिंग लाइक अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन के लिए हमने अल्कोहलिक KOH यूज किया था. यहाँ पे हम H2SO4 यूज करेंगे, विच इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. Water निकलेगा, OH from here, H from here, and you will get a double bond, which is alkene. Now the point that you need to understand is कि ऐसा नहीं है कि जैसे अल्कोहलिक KOH था लास्ट एग्जांपल में, हर एग्जांपल में हमने अल्कोहलिक KOH ही डाल दिया था. यहाँ पे H2SO4 का टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन मेंशन किया गया है कि तुमको कितना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए या कितना डाइल्यूट H2SO4 चाहिए. Out of the three, tertiary alcohol is the most reactive. Out of the three, tertiary alcohol is more reactive than secondary alcohol and then primary alcohol. Tertiary being more reactive than secondary than primary. ये हम लोगों को सीक्वेंस देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे रिएक्टिविटी का. तो हमें कंडीशंस भी अलग अलग यूज कर रहे हैं हम इन ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ अल्कोहल. इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल we can use a very mild condition, जैसे we can use 20% H2SO4 and we can heat it to 363 Kelvin, that is 90 degrees Celsius. For secondary alcohol, which is a little bit less reactive, वहां पे हमें कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 का बढ़ाना पड़ेगा, तब रिएक्ट करेगा, और टेम्परेचर भी स्लाइटली हाई है at 373 Kelvin. Primary alcohol, which is the least reactive among the three, the conditions has to be extreme. यहाँ पे we use 98% H2SO4 and the temperature is also 443 Kelvin. So it's 170 degrees Celsius. So these are the temperature and the conditions that you need to remember. कि अलग अलग अल्कोहल होएगा तो हम लोगों को ये कंडीशंस याद रखना है. So we'll just go about it. So here I have written three examples. The first example is of a primary alcohol, that is ethyl alcohol, ethanol. The second one is of an isopropyl alcohol, a secondary alcohol. And the third one is of tert butyl alcohol, a tertiary alcohol. So we have to remove H and OH, that is OH from alpha carbon and H from beta carbon.
So this is my alpha carbon attached to the functional group. This is going to lose an OH and यहाँ से मेरा एक H lose होने वाला है. So the product that I'm going to get is CH2 double bond CH2. So I've got an ethylene. Here the concentration is 98% H2SO4 and 443 Kelvin क्योंकि primary alcohol. When you have a secondary alcohol, we have reduced the concentration of H2SO4 to 60% and temperature to 373 Kelvin and same tertiary के लिए और कम होंगे. तो secondary alcohol का देखते हैं, यहाँ से OH जाएगा, ठीक है, this is my alpha carbon. Now these are my beta carbons. दोनों beta carbons identical है, तो कहीं से भी निकालेंगे, it will be the same thing. So let me just remove it from here. So the product I'm going to get is CH3, CH double bond CH2. In the third case, यहाँ से OH जाएगा एंड बीटा कार्बन वापस 3 है, अल्फा कार्बन है, ये तीनों बीटा है और तीनों भी आइडेंटिकल है, तो कहीं से भी मैं हाइड्रोजन निकाल दूं, इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग. लेट मी जस्ट रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द अपर साइड. So it becomes CH3, C, CH3, double bond CH2. Okay. So we have got ethene, propene, and isobutylene from these three examples. We can actually use one more dehydrating agent. एक और dehydrating agent है जो हम use कर सकते हैं. यहाँ पे I'm just writing down the conditions for primary, secondary, and tertiary. One of the dehydrating agent that we have used is concentrated H2SO4. Okay, so दो type का reagent we can use. The first reagent we have already seen, that is concentrated H2SO4. The other reagent that we can use was Al2O3, alumina. Alumina can also be used as a dehydrating agent for alcohols. Okay, so now the conditions, you know, for primary it was 95% H2SO4 and you were heating it to 443 Kelvin. For secondary it was 60% H2SO4 and you were heating it to 373 Kelvin. While for tertiary it was 60, 95 and 98, both will be fine. 20% H2SO4 and you were heating it to 363 Kelvin. Here in the case of alumina, it is very simple. There is no concentration, it is just temperature. Here you heat it to 623 Kelvin, here at 523 Kelvin and here at 423 Kelvin. The temperature is not absolute, it just changes sometimes. It depends on the condition, but more or less for MCQs and all, we need to remember this. So it's 623, 523 and 423 for alumina. Now we'll do the last example for this part. I'll just take CH3, CH2, CH. I have an OH over here and I have CH3 over here. So this is my alpha carbon. And now I have two beta carbons. I have one alpha carbon while I have two beta carbons. So अब ऑप्शन आ जाता है कि कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा. But before that, I will just write down the condition. As this is a secondary alcohol, so I will be using 60% H2SO4 and I'll heat it to 373 Kelvin. Or I can use alumina and I can heat to 523 Kelvin. Now, as you have two different beta hydrogens, okay, beta carbons, so you are going to get two different types of alcohol. If OH is lost from here and H is lost from this beta carbon, so the product that we are going to get is CH3, CH, double bond CH, single bond CH3.
द अदर रीजन इज कि अब अगर यहां से भी हाइड्रोजन जाता है, so the product that you get is CH3, CH2, CH and double bond CH2. So here you get but2ene or beta butylene, and here you get but1ene or alpha butylene. Out of the two, this becomes a major product, and that is because of the Sitzeff rule. Sitzeff rule says that hydrogen is lost from that beta carbon which has less number of hydrogens. So this beta carbon has 2 hydrogens, this carbon has 3 hydrogens. So hydrogen will be preferably lost from this beta carbon. With this, we complete the elimination reaction, both A and B. We have done dehydrohalogenation and dehydration. We'll go with the second MOP, that is from alkynes. अगर alkyne से alkenes बनाना है, तो obviously we have to do dehydrogenation, that is addition of hydrogen. But the thing is कि we have already learnt about this reaction in alkenes. वहां पे हम अल्काइन से हमने अल्केन्स बनाया था. कैसे? यू हैव एन अल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C, एंड हम अगर कोई यहाँ पे रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन के लिए लेट मी से कि आई हैव यूज्ड H2 एंड एरो के ऊपर आई कैन जस्ट पुट एनी कैटलिस्ट, रानी निकल और प्लैटिनम और पलेडियम. So this is my hydrogen gas and this is my platinum solid. Barabar, we are doing catalytic hydrogenation. Why have I written dehydrogenation? It is hydrogenation, I'm sorry. So we are doing catalytic hydrogenation. So हम लोगों को पता है कि एक बॉन्ड ब्रेक होने वाला है. ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 बॉन्ड बचेगा. This will remain as it is and you will be having 2 hydrogens attached to it. But the reaction will not stop over here. Okay, you have one more double bond, so the reaction will not stop over here. It will again react with hydrogens. It will again react with hydrogen, and it will give you one more hydrogen two more hydrogen getting attached to both the carbons. एक एक H attach हो गया था, अब एक एक और H attach हो गया है, giving you alkanes. So this is alkenes. This is alkane. So हमने ये एमओपी में देखा था, अल्केन के एमओपी में यू कैन से कि यहाँ पे अल्कीन भी बन रहा है. आई विल डिसएग्री, आई विल से यहाँ पे अल्कीन नहीं बन रहा है. ठीक है, ये रिएक्शन अल्कीन तक कभी रुक ही नहीं रहा है. और अगर तुमको पेपर में भी कभी पूछा जाएगा तो तुमको एक्चुअली बीच का स्टेप कभी लिखना भी नहीं है, हमेशा फाइनल स्टेप पे ही जाना है. तो अल्काइन प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम विल गिव यू अल्केन. दिस इज इट. बीच में कुछ नहीं मिल रहा है. वी वॉन्ट टू स्टॉप इट टिल अल्कीन. हमें इसे अल्कीन तक रोकना है, तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशलाइज्ड कैटलिस्ट यूज करने पड़ेंगे. एंड वो स्पेशलाइज्ड कैटलिस्ट है पलेडियम विथ कैल्शियम कार्बोनेट, पलेडियम कोटेड विथ कैल्शियम कार्बोनेट और पलेडियम कोटेड विथ बेरियम सल्फेट. Now palladium coated with calcium carbonate is Lindlar's catalyst. And palladium coated with barium sulfate is Rosenmund's catalyst. ना एक्चुअली क्या हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट की कोटिंग की गई है ऑन पलेडियम. तो दीज आर एक्टिंग लाइक अ पॉइजन्स. पॉइजन्स मतलब जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देंगे. तो कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट, ठीक है, पलेडियम की एक्टिविटी को कम कर देगा और जो अल्केन तक प्रोडक्ट बनने वाला था वो अल्कीन तक रुक जाएगा. यहाँ पे हम प्लैटिनम के अलावा रानी निकल और पलेडियम भी यूज कर सकते थे ना, रानी निकल, पलेडियम एंड प्लैटिनम.
तो अगर मैं इन तीनों में से कुछ भी यूज करूं तो द रिएक्शन विल गो टिल अल्केन. But if I will use palladium calcium carbonate or palladium barium sulfate, the reaction will stop till alkene. Let us go with it. Let us go with some examples. So the first example, let me take ethyne, that is acetylene, HC triple bond CH. Barabar. We are writing here H2 and I will write here only palladium. And यहाँ पे I'm again taking the same material HC triple bond CH. I'm again writing here H2, but now instead of only palladium, I'm writing palladium calcium carbonate, that is Lindlar's catalyst. So in the first one, क्योंकि I have used only palladium, ये complete reduction करेगा, complete dehydrogenation करेगा, दो H2 use होगा, giving me the product as CH3 single bond CH3. दो बॉन्ड ब्रेक होगा, दो हाइड्रोजन इधर आया, दो हाइड्रोजन इधर आया. But क्योंकि in the second one I have used calcium carbonate, so only एक ही bond break होगा and the product that I'm going to get is H2C double bond CH2. So here I have got ethene. Yes, sir. Okay, the reaction is done, but one more point I want to keep over here. That's very simple. Like I'm giving you one more catalyst. You have palladium calcium carbonate and you have palladium barium sulfate. Both of this will convert an alkyne to alkene, but it will convert an alkyne to a cis alkene, cis on the same side. If I want an alkene which is a trans alkene, then I have to use another catalyst, that is sodium in liquid ammonia. Sodium in liquid ammonia will give you nascent hydrogen. This is called as Birch reduction. And this will convert my alkyne to alkene. Let me just explain it to you how and what am I trying to tell you. यहाँ पे I have put carbon, triple bond carbon, and just for the sake of it, I'll put both chlorine and not hydrogen. So this is what I have taken, dichloroethane, correct? Now I'm just taking H2 over here and I'm using palladium calcium carbonate, or I can also use barium sulfate. Now the point is that both the hydrogen will get attached from the same side. यहाँ से हाइड्रोजन अटैच होगा और दूसरा हाइड्रोजन भी यहाँ से ही अटैच होगा. मतलब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड बचेगा एंड बोथ द हाइड्रोजन विल गेट अटैच्ड फ्रॉम द सेम साइड. So as it is getting attached from the same side, you will get carbon double bond carbon. Both the chlorine will go up and both the hydrogen will remain down. So you are getting an alkene, but this is a cis alkene. I'll rewrite the starting material again. तो ये सिस अल्कीन बना रहा है. अगर मैं इसमें बर्च रिडक्शन करूं, मतलब अगेन आई हैव द सेम स्टार्टिंग मटेरियल, but now I'm not using H2. I will use two nascent hydrogens because arrow के ऊपर हमने लिया है sodium in liquid ammonia. Now in this case, the hydrogen will get attached from the opposite end. One of the hydrogen will get attached from the lower wala side, while the other hydrogen gets attached from the upper wala side. ठीक है? ये कैसे होता है एक्चुअली? यू हैव क्लोरीन, यू हैव सी, ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके डबल बॉन्ड हो जाएगा
and you still have another chlorine. ठीक है? So one of the hydrogen gets attached to both the carbons. ठीक है, ये इस तरीके से होता है कि वन ऑफ द हाइड्रोजन गेट्स अटैच्ड टू बोथ द कार्बन. दिस इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल, बट फॉर अ वेरी स्लाइट सेकेंड एक के साथ वो बॉन्ड बना रहा है और एक के साथ इंटरैक्ट कर रहा है. तो हाइड्रोजन ने दोनों कार्बन के साथ नीचे से अटैच किया है. अब दूसरे हाइड्रोजन को भी अटैच होना है. अब वो नीचे से अटैच नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी ये अटैच्ड है. इसीलिए वो क्या करता है, वो ऊपर से अटैच होता है और ये यहां से ब्रेक हो जाता है. So the product you get is C double bond C. ये क्लोरीन इधर आ गया, ये वाला हाइड्रोजन नीचे से अटैच हुआ, ये क्लोरीन नीचे आ गया और ये वाला हाइड्रोजन ऊपर से अटैच हुआ. ठीक है. सो द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल रिडक्शन एंड अ बर्च रिडक्शन इज कि द वे इट इज गेटिंग अटैच्ड. इन बर्च रिडक्शन बोथ द हाइड्रोजन्स आर गेटिंग अटैच्ड सेपरेटली. पहले एक हाइड्रोजन आया, दोनों के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बनाया, बराबर. फिर दूसरा हाइड्रोजन आया. दूसरा हाइड्रोजन क्योंकि बाद में आया है, वो नीचे से नहीं आ सकता, तो उसने ऊपर से अटैचमेंट किया. तो एक नीचे से अटैच हुआ, एक ऊपर से अटैच हुआ, एंड दैट गेव यू अ ट्रांस प्रोडक्ट. ऊपर वाले केस में तो ऐसा सीन ही नहीं है. ऊपर वाला केस कैटालिटिक रिडक्शन है. हमारे पास में पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट है, दोनों हाइड्रोजन पैलेडियम के ऊपर एड्सॉर्ब्ड है और वो ट्रिपल बॉन्ड में ऐसा चिपक जाएगा. बस ऐसा, ये तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड है, बस वो ऐसे चिपक गया, तो दोनों भी सेम साइड से अटैच हुआ. So this is the difference between both the reaction. One of them gives you a trans product while the other one gives you a cis product. Cis product actually तुम्हारा palladium and calcium carbonate या palladium barium sulfate के साथ में हो रहा है क्योंकि both the hydrogen is getting attached from the same side. While in case of Birch reduction एक हाइड्रोजन नीचे से तो दूसरा हाइड्रोजन ऊपर से अटैच हुआ है. I'll give you one more example. Let's say you have butene. Sorry, butene. This is butene. Let us do the reduction in two ways. In the first way, we are using H2 and we are using a catalyst that is palladium calcium carbonate. You can also use palladium barium sulfate. Both the hydrogen will get attached from the same side, giving you the product C double bond C. Now, as hydrogen is getting attached from the same side, both the methyl groups are on the same side. Both the hydrogens are also on the same side, giving you cis butene. If I use the Birch reduction wala technique, two nascent hydrogen, okay, and you are using Na in liquid ammonia, one of the hydrogen will get attached from the lower side, the other one from the upper side, giving you this product. You have C, CH3 and यहाँ पे H. You have double bond. H दूसरे तरफ से ऊपर से अटैचमेंट किया है और CH3 उस वजह से नीचे आ गया है. So this gives you trans butene. We'll go to the third and the final MOP, which is very simple. That is from vicinal dihalides. Okay. From vicinal dihalides. Now you are very well aware of alkyl halide. Alkyl halide matlab, see, you have an alkane. Let's say you have CH3 single bond CH3. Okay, this is an alkane. You remove a hydrogen and you put halogen. This becomes alkyl halide. Okay, you remove one more hydrogen and put one more halogen, it becomes dihalide. Now इसमें से मैं एक और हाइड्रोजन निकालूंगा और एक और halogen डालूंगा. But I can do it in two ways. The first way,
I can remove the hydrogen of the same carbon. यही वाले carbon का I can remove hydrogen. I can make it as CH. 1x over here, 1x over here. This is also a dihalide. Or what I can do is I can just remove a hydrogen of the adjacent carbon. मैंने इसका एक हाइड्रोजन निकाल दिया, making it as CH2X, and this one is also CH2X. So this dihalide is called as geminal dihalide. If both the halogens are present on the same carbon, it is called as geminal dihalide. And if it is present on the other halogen carbons, so it is called as vicinal dihalide. Adjacent carbons, it is called as vicinal dihalide. Vicinity. So in this third MOP, we are going to use vicinal dihalides. Okay. It is a very simple reaction. So the third one is from vicinal dihalide, okay, from vicinal dihalide, it is a very simple reaction. Just let me take CH2, single bond CH2, and I have attached two bromine over here. One bromine over here and the other bromine over here. Okay. So I will just write down the name So for I this. can't see what you're writing. Okay, one second. Okay, so this is a very simple MOP. You have dihalides. We will name it. It is 1,2 dibromoethane. And we just use a metal like zinc over here. So what zinc will do is zinc will take both the bromine and it will be lost as ZnBr2 or ZnCl2 if Cl is present. And we get CH2 double bond CH2. So it's a very easy way to make alkene. What we are doing over here is dehalogenation. We are removing halogens. I'll give you one more example. You have CH3, you have CH, you have Cl, you have CH, you have Cl, you have CH3. We have used Zn again, solid, Zn solid. We are heating it. You get CH3, CH, double bond CH, CH3 plus ZnCl2. Butene.